and some with your body, like PTI Global, and if you want to join as well. So we are building up that one. We are starting being an inter-industry association, and it's for us, working together is more important than doing anything. You know, if we can understand, we do, because most of the decisions they're doing in one way or other. This your climate related thing, even in the financial domain also, but they do not understand they're doing it. Sometimes they get funded, which is actually repetition of what they other people have already done. So it is a kind of repeating. So that's the message of me. So we are building on the platform where a kind of community happens that, you know, all of us, we will be there and we will discuss about what are the challenges and what are the activities we should be undertaking and who will do what activity. This is a very crude way. We are trying to build up a liaison. Now, to give your answer, at the occurrence of trying to build up this liaison, this climate related catastrophes are now more frequent, and albeit it is really impacting on the ground. Repayment is impacting. So there are two scenarios. Like in central Assam, repeated floods are there. Now, they have built up their this repayment structure in such a way that those 2 months nobody needs to. I mean, if somebody wants not to repay, they can. So now that's in the ecosystem they have already developed, because repeatedly they are getting this, these floods. Second, like in Tamil Nadu, Uttarakhand, Kerala, we have seen that, these floods are there, excessive rains are there. So all these things were there. So we are trying to, because that's very instant one. We didn't know that it will occur, but it occurred out of nowhere. So we have done your uh, helping them to get fund, helping them to develop the product, helping them in other means. But those are sporadic initiative. Possibly we have to do in a more structured way. That's what we are looking for. The other thing, Dr. Insha, is this microfinances fund is very much aligned with the objective. And when we are getting fund from the priority sector lending, they have a stipulation of priority sector. Like you can be investing in these 10, 12 are there. So now these climate related things are not there. So our around 50 to 53% is coming from your banking sector. So there is a big gap. Second, funding, availability of the funding, it's a big gap. But even before, we wanted to do something. And these institutions, they are doing things, like maybe they're doing some sustainable financing, maybe they are doing something, but actual reporting is not happening, either for the source of fund or they do not understand. So data is a big problem. Even if they're doing, we do not have that data. Second thing, if it is aligned with this your anything like your priority sector lending kind of thing, aligned with enterprise or agriculture, we do not have any money to do it. So there is a big gap. Third thing, that we also need a capacity building, like how to understand that what product is needed, financial product. Then what kind of like what could be the parameters of the product. Right. So these are the things which possibly we have to do to take it forward. There's a big gap. And you were asking about, you were telling about this, your regional report. Regional report means which region? So
From the southern report itself, we identified that for the eastern states, Okay, okay. yeah, eastern That's states, Indian one. yeah, we're Okay, looking at India per se. okay. Because we are also facilitating a platform called Nomnar, which is Association of Associations, Microfinance Networks in Asia Pacific region. So we are working with 9, 10 countries. So when you're telling it regional, I was thinking which region. Anyway, it's fine. Yeah, so the report is focusing on India basically. Okay. No, I've seen that report, Okay. but it's not very detailed one. I've seen there are a lot of references from Bharat Microfinance report as well. Yeah, Yes. yeah. So there are Right. two, three things. One is your data, capacity building, funding, and also orientation and learning from each other. Right, sir. Uh, Also, we have understood from the reports or the literature that is available that Hmm. microfinance as an industry is in a dilemma because it has to balance, as you already mentioned, its financial resilience, considering the climate risk, the increasing climate risk, and its development mandate, the social mission of providing to the marginalized. So, like you already listed out what are there is a strong or there's a huge lack of funding, as you mentioned, sir. So are we looking at that scarcity of funding at an institutional level, or what is being disbursed from MFIs to the borrowers? So it's like if we don't have money, so the microfinance system is like you get the loan from lending agency and adding on your cost of operation and a bit thin margin, you extend it to the last person, right? Hmm. Right, So sir. it is basically the whole ecosystem. If we are not getting any money from anywhere, we cannot extend that loan to the end customer as well. And these are poor people. If we tell them that you biodigester by yourself or some apparatus by yourself, it doesn't work in that way. Right. Yeah. So lack of funding is a, critical problem at the moment. So, what are some of the important barriers that MFIs have in MFI accessing climate from, for example, refinance institutions? Is it lack of reporting requirements that MFI has? Since it's dealing with mostly with the marginalized, and there is a sheer lack of data or credit-based data from the borrowers, or is it lack of standardization? Uh, what are the issues? Like, so we have read that the creditors are withdrawing, the MFIs are withdrawing funds from the market. They are not giving it to the like the outstanding portfolio has also declined, and PAR has also increased from, I think, 2.1% to 6.4%. Can we directly align? So one of the reasons that is quoted is that there is credit over leverage. Can we also tag this decline in PAR with the climate issue? Not at all. It's only there was some. So post COVID, the situation. So now it is 2 point something, your power 30, and it is gradually decreasing. So what has happened, like in post COVID, na, Yeah. there was a push and pull factor. So we were expecting your third wave of COVID, Hmm. and just a minute, it's so hot. Like your third wave of COVID first and second wave of COVID, people didn't have money. Hmm. And this, when we were expecting that third wave will come, these poor people, they wanted to get more money in the system and keep it there. They know that if it is distressed condition, government will come up with something. Hmm. So they wanted to keep this one. Second thing, it's from the pool factor. Pool factor also, like after the second COVID, people were trying to rebuild. These poor people were trying to rebuild their um, enterprises, agriculture. So they wanted
more money, because in ongoing economy, if rupees 5 works, if it is like your shuttered down economy, it has to, if you want to restart it, it will take 7 rupees. So that's the economy. So they also wanted to more get the more money. On the other hand, in the push factor, this your microfinance institutions, they did couldn't do business uh, for a long time. They also wanted to uh, do more business. So they were somehow uh, making the portfolio your this standard portfolio. So they were giving more loan to standardize the asset, that these poor people, they should not get hit of the report of Credit Information Bureau. So that's also the push factor. Now, overall, what happens, that there was over leverage. When we saw that there is over leverage, then we put forward your these guardrails, which we called Sankalp 1 and Sankalp 2. Then, then what happened, that the market, so it was like, one client cannot be indebted more than 200,000 INR. Then your one client should not be catered by more than 3 institutions, including all type of institutions. So these are there, and it has to be, the market has to be like, sliding down a bit, but it has slided down a bit for a good cause. Our market is now very stable. Our this your par 30 is also reducing over the period of time. So we are seeing this one, but it is not linked with your climate related thing. Right. Right. Having said that, but the climate risk is affecting. If you look on ground, it is declining the productivity. For example, in the dairy sector, it is declining the crop yield. Right. These are evidential based studies. So as you said, currently, whatever the decline was there in PR 30, it is now kind of bouncing back. But do you also, as an expert of the field, do you see there is a need to have a climate sensitive underwriting in the microfinance sector in order to make it more immune and in order to make it more resilient? Because climate change, we know it's going to increase and the risks are going to be there. Question is, how do you want to do it? Right. So the lack of data, as you mentioned, is a big problem here. Right. So like See, what we have done in Southern, along with your World Bank, at that time it was IFC, and your Axion, we could build up a risk framework for the microfinance sector of India. right. But your this climate quotient is not there. At that time, it was also not necessary. Till now, what we are seeing, that we need to include it, but where to get the data, how to get the data, and our analysis is, up to pin code level. Hmm. So now, pin code level data, getting the data of, this your what do you call it, time series data for on this your climate, we are not very sure of, because our forte was never been this climate. Our climate is coming because it is impacting the life of poor people, it is impacting the sector. Right. And in long run, now this 1,000 biggest, largest your listed company, they have to report on this your BRSR. They have to report. It will gradually percolate in towards the smaller also. Why I'm telling you? Because now the lenders and investors, they are much more focusing on all these three. So if we have a better portfolio analysis on that one, and if we have a better managed portfolio on those three parameters, possibly we will get more lending and more investment. That's why it is coming in the system. Yeah. So RBI recently launched RBI
climate related information system. How capable at the moment do you think microfinance industry is in transforming that data? At this point of time, it is not. We are trying to bounce back. Government has got us some credit guarantee facilities, which we are trying to access. Yeah. Now, at this point of time, we are not thinking till the time our market is revived, our portfolio has gone high, at par with the pre-COVID time. I mean, regular time. I won't say pre-COVID time, regular time. So we want to get into that one first, and then definitely our possibly simultaneously your this climate related assessment, climate related monitoring needs to be done. That's for sure. We have to do it. There is no other way. But at this point of time, like today, if you ask me, this you're accessing to the finance and give it to the poor people is more important than anything. But I totally agree with you that the quality of the portfolio, the repayment quotient in the whole ecosystem will be deeply and highly influenced by the climatic condition. Yes, but it is also different geographies what we are seeing, and there are many geographies where we are seeing massive change is coming. Like in Rajasthan, we are seeing that heavy rains are happening. Flood has happened in Jaipur, never heard of. We always knew that it's a dry and arid place. Now we are seeing that there is this. In our eastern side of India, we are not getting that much rain as well. So, there is a change happening possibly, Yeah. and we have to imbibe those change in our risk management. But at this point of time, our major thing is to access the fund and give it to the poor people. But simultaneously, we need to work on what I was telling you, that we are developing this your network Yes. Yes. of the institutions. So this is where we stand, and we are open. Other thing what we are doing, we are also trying to do some work in the segment of parametric insurance. Yes. So we are in the last leg of getting the project, but keeping our fingers crossed. The time it is not in our hand, and the time it is not really the deal. So, but we are trying to do something in that climate insurance, like your parametric insurance side. And I would also invite you people. The other thing is that we are also looking forward from Sadhan's perspective. We are also looking forward for some, some collaboration, some funding, some working together in this climate and sustainable financing. What could be the model? From the possibly with this, your parametric insurance will get some information, but we want to do it in a bigger way. And as Sadhan is a not-for-profit agency, we have some limitations of funds as well. So we look forward for doing something for funds to do the things, because this is one of the things where you generally do not, till now we haven't get much money into that we can start working doing the things. Yeah, Dr. Paul, let me come here. So thanks for all your inputs. I'm sure Insa is not on those. We are also looking for collaboration with like-minded institutions. So currently, we are mostly working with the Minister of Finance, Niti Aayog. I mean, you must have seen that Niti Aayog has come out with 10, 11 reports on climate change. So we led one of the reports of Niti Aayog on climate finance area. And we're also closely working with a few state governments also, including Chhattisgarh, Jharkhand. We are likely to start working with Maharashtra also. So, and I can see that Insha said that there are synergies between two organizations. Basically, we have an understanding of the financial system as well as climate change, and you are a specialist in microfinance area.
So, and we'll be happy because I think you have created some kind of umbrella initiative, and we'll be happy to be a part of this initiative. And since you are based in Delhi, we can come down to your office also and see what kind of work we can do together. Again, we are also dependent on, although we are a private organization, and we are mostly funded by foundations also. So we'll see that if we can do some work together, and if you can help you in raising some capital, some money, that's also quite possible. But let's have a call or a one-to-one meeting. So that will be good. I mean, we'll be happy to have you in our Delhi office. If not possible, we can come down to your office as well. Where is your office? It's Okla Phase 3, just Oh, behind okay. the Modi Mills. Okay. We are in this your South X, not that far, I think. Yeah, not that far. Yeah. We'll be happy to have you here, host you here also. If you have some time, please come to your office. And I also stay in Hostcast, not far away from your office. Acha. I mean, let us be depending on Sangeeta. She can fix this issue of like meetings. How can we take it? Sangeeta is actually working with us in the segment of your climate. Okay. So she is aggressively doing that work, and she is very aggressive in the like in her life also. She is very aggressive in. So all of our papers, wastage papers, she make a diary. She makes a diary and use it. So she's the only person in our office does this kind of thing. So let us be, I mean, getting the help of Sangeeta to fix up the meetings and everything. Yeah, I mean, one of the things, Lavanya, Lavanya, you're from Odisha, right? Yeah, I'm from Odisha. Okay. Which part of Odisha? Kendrapada. Kendrapada. Achha. Sangeeta is also from Odisha. Okay. Oh, that's great. Which part? Sangeeta, are you on the call? Yeah, she's in the call. Basically native from Sundargarh, now settled in Bhubaneswar. And okay. Yeah. Okay, understood. And also Okay. in Delhi. Okay, glad to know that. Yeah, thank you. So we can do that one, and we are also looking forward. See, Lavanya, what we have seen over the period of time, this small projects, doing some pilots, it's good to showcase. Right. But unless and until we work in the ecosystem, like the building up the capacities of the institutions, Right. giving them the understanding, helping them to build up the portfolio around it, like TA support or all those things. If we are not doing that one, we can do everything in the project, but we won't be getting scale. And if it is not in scale, it is really tough to influence government. You are working with government as well, so they always look at the number. No, I absolutely agree with you. So if we can Definitely, do something, we are looking at system level work. I mean, at the microfinance system level in this case, and definitely you can help us to identify the challenges, which is basically inhibiting the scaling of microfinance institutions. We look at the same time, as you know, that most of the time the funding agencies, they will say that, okay, show me the result. Okay, if you work at the system level, the result will come after many years. Okay, the result will be not immediate. So we need to balance both implementation of certain work as well as working at the system level. So we'll talk more about that. But I'll appreciate if you could come with us the possible areas of collaboration. We're also going to think about that. Okay, then we can drill down. Lavanya, it would be good if it is other way around. If we get a small note what we discussed today and what are the areas you are seeing probable collaboration, we can put our mind into it and we can return it back. If you are telling us to do this one, I'm telling you very genuinely, it will take a month. No. What I'm saying, you can come down to us. We'll also come to you. I mean, both. Sure. Okay. So not you only. So it's awesome. No. Before that, if you can send us a document on what we have discussed today,
some bullet points to start, uh, to roll the discussion, and also what are the convergence area you are seeing where we can work on. Then on the basis of that, we can also discuss, and we can let us see if we can have a presentation also in that network, what we could build up till now, if we can do something. Let us figure it out. But at this point of time, let us concretize our ideas. Sure. Insha will give us some time. Insha can share some kind of concept note. Then definitely you can brainstorm among your team members. Then you can 2 pages. Yeah, 2 pages. I mean, we don't create a long concept. Only 2 pages. It's a crisp 600 words. to see. Yeah. Sometime I'm telling you, these people, they send us these your documents which are 20-25 pages, and it's very tough to do the things. 2 pages we can make it 25 pages when we will go along, but at this point of time 2 pages will be enough for us. Yeah, sure. We'll send you a 2-pager. Okay, Right. one area I can look at is the capacity building part, because we have been trying to do a lot. I personally have done number of capacity building program, but that's at the banking level, not microfinance institution level. So in this sustainable finance area, but see, definitely we can find a way. Okay. So yeah, that sounds good. And also the other thing is also, if you have some contacts on the investors and lenders, we can also talk to them. Why I'm telling this one, whatever you say, unless and until they are, they are budging, we cannot do a lot of things. So if you bring 2-3 of those, and if they can also tell us that, see, we want this, we do not want anything other, but we want these 3 things, we can add on another 3 things and make it happen on the ground. So both of the sides will be very, very much taken care of. Insad has not told you yet. So what we are trying to do is that trying to create, organize some kind of round table or very small group discussion where we can invite, like you said, that investors who are putting their capital at MFI, as well as borrower or intermediaries or institution like yourself. So get all the inputs together, and based on that inputs, then we can create some proposal which can be fundable. And you have correctly said that investors in MFI would like to hear from their side what they are looking for. And if you have any suggestion, any investors you think that we should speak with, we'll be happy to speak. Please let us know their names. We'll reach out to them. So what happens that, no, our side of the investors, we have more or less we have reached. Now your side of the investors, if we can get 2-3, then also we will try to bring couple of this side also, where we also communicated already. So we can bring them 2-3 of those, and we can have this is a very good meeting and build up the agenda, future agenda. Okay, it's sure. Possible. It's possible. And Insha, if you can also put the names of those lenders, we will also see whether we have contacts with them. If we have contacts with them, we'll explore more other than those. Okay. Right, sir. Do that. We have perfectly a fine. We'll Yeah, perfectly fine. Go through it. How old is your institution? It's a new organization, 2.5 years, but the people are old. The organization is new. So basically, we are a team of 16-17 people now. In our advisory board, you probably know Dr. Rajiv Lal, who was earlier the CEO of IDFC. So he's in our advisory board. Then a couple of ex-IAS officers also, they are also in our advisory board. Then Dr. Dhruva Prakash, who was heading CPI India earlier, he is also in our advisory board as well. Okay. So I also spent some time in CPI India. So I spent maybe 6-7 years there. So, okay. Yeah. They're also partnering with us. We are also exploring the possibility. Like we are building our work, being a networking institution. Our work is to pull together everyone, have a discussion, try to get into the thick of the things, because we know what is necessary. We know what has to be done, but we do not know how to be done. That's where your this competency we need to work on.
Yeah, sure. We don't know. Like we know that this is a gap in the segment. We know that this has to be fixed in this way, but we do not know how to do it till now. That's understand. No Yeah. problem. No problem. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you for your time. Thank you very Inshallah, we'll much. get back to you. Sure. It's Nice to good to meet you, talk to you. Sangeeta. Thank you Good to so talk much to you. for Bye. your time and also for enriching our understanding on how things are at the moment on ground. We would Thank be you happy very to much. collaborate with you. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Thank Ms. you. Bye. Sangeeta. Yeah. Bye.
वो बोल रहे मुझे दे सकते हैं हम नरेश को ना पूछ कर तो दे नहीं सकते सीईओ को भी मतलब सीईओ को भी मतलब उनको कहा था करें वो ऑफिस का नंबर दे दो नरेश कुमार ये कर दीजिए सेवा नहीं हो रहा नहीं वो हैप्पी इसलिए खत्म हो जाएगा जब यहाँ मेरे पास इसका बर्थडे हम लोग का बर्थडे और इंसिडेंटली रोनी से बेटी का बर्थडे क्या सेलिब्रेट हुआ रोनी के साथ नॉनवेज बनाने के लिए बना दिया रोनी आपकी तरफ से पता नहीं लोग खाते नहीं कौन खाता है फिर मेरे को कभी नहीं लगता मेरे को मतलब कभी नहीं पता ये आज कुछ क्या वेरी क्या पनीर और दाल मैंने स्पेशल बोला था मैं बोला मेरे को टाइम नहीं मिलता क्या चीज है मेरी फेवरेट है आपकी मामी क्या है ये पे मेरी मामी मामा की वाइफ हाँ यहीं पर है वही तो पूछ हाँ सर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ नहीं होगा साल में एक महीना मैंने बोला था एक महीना मतलब 6-7 हाँ नेक्स्ट मंथ नहीं होगी व्हाट डिड ही टेल एक महीना क्या होता है नहीं मिलेगा आई कैन नॉट गिव यू मिनिस्ट्री वाले लोग एक साल चले जाते हैं वो तो तुम कर सकते हो यहाँ पर है सैबटिकल का अब नहीं है अभी कुछ सोचा नहीं कर अब बहुत बढ़िया हो गया कुछ और पढ़ इंग्लिश अगर अच्छे जगह मिले तो पोस्ट डॉक्टरेट में करूंगा
तो डॉक्यूमेंट करने के लिए ये बैठ के कर सकते हैं, उससे अच्छा कोई काम नहीं। इधर दुनिया भर का प्रॉब्लम पड़ा है, 4-5 पेपर लीजिए कर लीजिए। Right institution needs to be there. हाँ, घर में जरूर कर लीजिए, इनके पास तो वो गाइड नहीं होता संगीता, उसे जॉइंट कोलाबोरेटिव राइटिंग होना पड़ता है। ये तो और भी बढ़िया है, सुविधा हो गया। ये सीपीआई इंडिया ग्लोबल जो भी है, इन लोगों के साथ मिलकर तो हम कितना बढ़िया बढ़िया पेपर प्रोड्यूस कर सकते खान साहब को भी घुसा दिया। क्लैरिटी के लिए, हाँ। क्लैरिटी के लिए। ये जो हमारा आपका हुआ क्या कहते हैं, ऐसे हम बात कर रहे थे, एसपीएल क्या नाम है उसका? एसपीआई सीपीआई ग्लोबल। एसपीएल मोना कछुआ पहले थी। एक बंदा नहीं है, क्या नाम है उसका? आई क्या नाम क्या? एक बंदा जो बोलता बहुत अच्छा, रोज बोलता थी, और उसमें उसका 100 से ज्यादा पेपर पब्लिश हो रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं, वो जैसे उसके आई क्या तो है, के बारे में नहीं लिखा है डांस। और शायद इनको बहुत टेंशन होगी। हाँ हो गया फिर। इतने हिंदी के पेज घर में डाले थे, एक ही पेज हिंदी का प्रोग्राम निकला अभी तो। इट्स ये जो आपका असाइनमेंट 12/5 की जगह 17/5 का असाइनमेंट, कौन वाला? ये वाला वापसी 17 की होगी। हाँ 17 की होगी। 17 की होगी। हाँ ठीक। 17 की होगी। मैं छुट्टी लिया था बीच में। चलो वाली इसका मतलब में कैसा एक अलग ही नहीं है पराठे के अंदर आता है इसमें दाल।
इधर मैं खुशबू है क्या? हाँ कैसी अंदर खुशबू? नहीं, अंदर नहीं आ रही, बाहर बाहर मारा था मैंने, वो थोड़ा दैट्स गुड। कभी अभी तक कभी मैं लगाती हूँ, बहुत ही माइल्ड है। धीरज बोला है कि खुशबू है इधर, और इनको पता कैसे चल रहा है। अरे खुशबू तो आ रहा हो तो दरवाजा खुला होगा, एसी है चल रही है, किसका है? रात को तो सोई थी, बड़ा हो गया है, थोड़ी देर गर्म थी। बैठ करते करते 2 बजे। हाँ वो तो मेरा बाल यहाँ से यहाँ नहीं हुआ है, मतलब 4 बार से टूट गया, मतलब चिपक गया है और वो हिल नहीं रहा। वो देखा ना, पुरी में भी वही हाल है, कोलकाता में भी वही हाल है। बाल चिपकता है ऐसा मुझे याद नहीं है। पूरी के तो बेहतर हुआ है। मैंने कभी ह्यूमिडिटी और हुआ से ज्यादा गर्मी। तो मार्च मेरे वैसा होता नहीं कहीं भी और नहीं। मतलब पूरी में तो रिकॉर्ड ना क्यों नहीं हो मेरा नहीं तो काला हो। क्यों नहीं हाँ होता? काला एकदम हो जाओगे पूरी, हाँ पूरी में काला हो जाता है। काला हो जाओगे पक्का। और गर्मी आपको 4 डिग्री ज्यादा मिलेगा पूरी में, भुवनेश्वर से ज्यादा। और मार्च में तो आप क्या बात कर रहे और हैं? वहां आप पर सब आग भी लग जाए, वहां पर कुछ भी हो जाए, देखो वो जो बीच है ना, बंगाली से भरा हुआ है। हम लोग सिर्फ मछली खाते ही जाते हैं और कुछ नहीं खाते क्या? वो हमारे नजदीक पड़ता है, दीघा पुरी हमारा वो नजदीक पड़ता है, हमारे लिए गोवा वही होता है। तो ये तुम थोड़े ज्यादा ही बोल रहे हो। नहीं, ये ऐसा है। नहीं, अगर बगल वाले घर में भी मछली पकड़ता, मेरी जो बहन है ना कजिन, हाँ, वो उसका वैसा है ना। और मामा मामा की जो यू हैव कलर्ड योर हेयर। कहाँ शैम्पू कर करके सारे निकाले हैं, मेरा ओरिजिनल कलर निकल गया। हाँ मेरा ओरिजिनल ऐसे है, इसलिए ओह अच्छा, जनरली डाई करते हो, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ब्लैक डार्क ब्राउन डाई करती हूँ, सो दैट इट लुक्स थोड़ा बट सा। ऐसे ही तो ठीक ही लग रहे हो, क्यों डाई करते हो? इफ इट इज नॉट ग्रेइंग वन एंड इफ यू वांट टू मिस्टेक है, अच्छे लगे। हाँ। लेकिन कलर नहीं बोलता, कलर ऐसे। जो मेरी बहन है, मामा के घर के दीवार के उस पर मछली का हाट लगता है, हम्म। उसी दिन को ज्यादा खाना खाते हैं। Sangeeta, you need to write here. Grant an extension of
of the study period till. लिखने के लिए मना किया है, अच्छा वो ही मना कर दिया, बाकी आप तो भी ठीक है, इट्स फाइन, इसको मेरे नाम से करके भेज दो। ऐसा कुछ है मछली का ऐसा ऐसा किसी कोई कोई का होता है। कौन बोला ये बताइए? संदीप। और जगह मच्छी वो बोलते हैं कि आप तो मच्छी खरीदते भी नहीं होता इजीली अभी तो जीएसटी लगे मिलता होगा बट पहले तो ऐसा था मतलब कि हमें जीएसटी नहीं नहीं, हमारे कोस्टल उड़ीसा में हर किसी के घर में पीछे में एक छोटा सा तालाब होता है, उसको गड़िया बोलते हैं, और उसमें मछली होता है। तो जिसको मन करे वो 4-5 पकड़ लेता है, अपना जो भी बनाना होता है वो बनाता है। एक्चुअली वो भरता टाइप का बनाते हैं, मछली को रोस्ट कर देते हैं, उसमें लहसुन और मिर्ची और नींबू डाल के वही खाते हैं। सुबह सुबह तो वही खाते हैं बदमाश लोग। सुबह में खाता है सुबह नाश्ता तो वही है ना हमारा पोखा। नाश्ता में खा सकते हैं नाश्ते में आप रोटी खाते हो, हम रोटी थोड़ी ही खाते हैं, हम पोखाल खाते हैं, पोखाल। ब्रेड के साथ मिक्स करते हो कुछ नहीं होता ब्रेड टोस्ट हम साहिबी नहीं, नहीं खाते हम बहुत ही देहाती लोग। खाली उससे होता है पोखाल खाते हैं। पोखाल पोखाल क्या मतलब जानते हैं? रात का भिगो हुआ चावल जो बच गया है, बासी चावल खाते हैं, उसके साथ ये मछली का ये बहुत ही बढ़िया। साग भी बना है, मतलब ज्यादा टाइम जिसके पास है।
शुभ तुमको किसकी आपको है मेरे पास नहीं यार, इससे मॉर्निंग उससे नहीं बैंक से आया था आईडीबीआई फर्स्ट बैंक है ना वो लास्ट लास्ट टाइम क्वेरी आई थी उसकी हमने सेंड कर तो मैंने भेज दिया था उससे तो आती जी सर भी नहीं देखी सर जी सर ने वो मेल नहीं देखा होगा हम टू भी कॉपी अभी मैंने उसी टाइम भेज दिया था फिर आज जी सर भी बोल रहे थे वो लिस्ट ऑफ पेमेंट प्राइस आज से मैंने लिख दिया अभी ये सारे लोग सर बैंक वाले लोग मुझे पकड़ रहे हैं मुझे पकड़ रहे हैं जितने जितने लोग हमने लेटर लिखा है लेटर हेड में सारे लोग कॉल मुझे कर I'm globally, I'm not getting to understand. The bill has come from GG ma'am or from your side. You know, sir, obviously GG ma'am. There's gone from the other. Well, वो actually किसने कहा सर मतलब जो लेटर तो जीजी सर के थ्रू नहीं है वही तो कॉन्टेक्स्ट सिग्नेचर The main letter. 21 बैंक्स को गया ना जो लेटर लेटर हेड हाँ वो तो जीजी सर के साइनिंग में गया है बोलो कि it has gone from my email ID, but it is from a mail office. ऐसे लगता है। सेवा अभी आप वो शिबू से बात करेंगे शिबू ऐसा हाँ किया है वो सारे का तो मुझे नंबर नहीं है ना तो आप शिबू से बात करके थोड़ा सा इसको एक्सपेडाइट कर देंगे शिबू से एक बार बात कीजिए सदाब साहब से कीजिए और रमन साहब से कीजिए ये तीनों के साथ कर लीजिए सलाम के साथ हाँ सदाब के साथ सदाब के साथ और रमन के साथ क्या ना सबको बोलिए 5-5 लोगों को भेजेंगे सीनियर लेवल इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है 5 सीनियर मेंबर नहीं है लाया कि नहीं क्या नहीं वो तो मैं नॉर्थ गोवा गई थी ना उससे क्यों पड़ता है वहां नहीं मिलता ऐसा भी है हाँ साउथ गोवा में सारा कुछ मिलता है ना आप लोगों का नॉर्थ गोवा से तो लिया था हमने टूरिस्ट लोग सारे जाते हैं आप ऐसे बंदे को बोल रहे हो ना जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में ऐसे कैसे हो तो आप गलत बंदे को रिपोर्टिंग कर रहे हो क्या सारा इंटरेस्ट शॉपिंग में है आदमी भी सब ज्यादा शॉपिंग था हाँ शॉपिंग वो कह रही कोई इंटरेस्ट नहीं है नहीं मुझे शाम को होना चाहिए मतलब नहीं कर दिया है फिर रात 8 बजे हो 9 बजे हो मैं निकल सकता हूँ हाँ निकल जाते वो ठीक है लेकिन इंटरेस्ट तो है ना शॉपिंग में हाँ बिल्कुल। वही तो बोल रहा हूँ कह रही मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे लिए कंफ्यूज हो गए। कोई लोग सर स्पिरिचुअल वाले क्या हो रहा है? यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना पूरी प्लेसमेंट है शॉपिंग किसी के चलते ना ये मोदी का ये हाल है वैसे शो हो रहा है वो देखकर तो उसका ऊपर बात कर दिया बहुत सारे लोगों के पैशन होते हैं कोई लोगों को शॉपिंग का पैशन होता है किसी को यूनिवर्स कनेक्ट कोई ना कोई जो गेटिंग रॉन्ग मुझे शॉपिंग का पैसा नहीं है। मुझे हैंडीक्राफ्ट और फैंडम का पैसा वो भी तो खरीदने से तो है नहीं खरीदना नहीं दैट्स अ डिफरेंट वन शॉपिंग का बहुत सारे होता है लोग चाहते हैं शॉपिंग करके आ जाते हैं मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मैं सिर्फ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मेरे घर में जाओगे ना तो तुमको पता चल जाएगा नहीं सर अभी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम खाली शॉपिंग देख रहे हैं सामान ले नहीं रहे हैं हम खाली टाइम पास उनका भी टाइम पास करवा रहे हैं हमारा भी कर रहे हैं हमको मजा भी आ रहा है वो भी शॉपिंग में काउंट होता है या नहीं वो विंडो कंट्रीब्यूटिंग द इकोनॉमी वो विंडो शॉपिंग होता है मैंने बहुत लोग देखे बाहर वाले लोग जो होते हैं ना वो शॉपिंग करते नहीं देखते हैं सारा मारवाड़ी लोग तो नहीं करते 20 मिनट 50 मिनट वो देखे रहते हैं सामान के ऊपर वो खंगालते हैं इधर उधर करते हैं ये नहीं ये तो बाकी लेते ही लोग कभी नहीं करते करते हैं शॉपिंग मार्केट लोग जब शॉपिंग करते हैं तब एकदम एक टन खरीदता है बहुत खरीदता है वो पहले हिसाब किताब करते हैं तो शॉपिंग ज्यादा होता है
अरे मत बुलाओ ना। हम्म, क्यों? बाहर चले, तशरीफ दिला, केक कटिंग। मुझे मैं जब नहीं जाता, देयर इज रीजन व्हाई। मुझे पसंद नहीं आता। क्या पसंद नहीं आता आपको? तो हल्ला गुल्ला, बहुत हल्ला कर रही है। कर रही है ना, हम बच्चे हैं, हम हल्ला करेंगे तो करो। मैं बुढ़िया हूँ, क्यों कर रहे हो फिर तो? मैं चल रही, मैं इसको लेके तो जाऊंगी नहीं। अच्छा तो चलो, आपके तो मजा कैसे आएगा सुनीता ना? चल, यू आर द यंगेस्ट पर्सन हियर।
हाँ 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 हाँ। ये तो आईसीआईसीआई वाला बैंक वाला बंदा है ना, ये लास्ट वीक बोला था मुझे, अभी तो उसका नंबर मांग रहा है, एनजीसीटी का नंबर मांग रहा है। लास्ट टाइम कुछ और बोल रहा था, लेकिन मुझे बोल रहा था कि किसी मेंबर एमएफआईएस को कोई लैंडिंग सपोर्ट मिला है फ्रॉम अदर बैंक्स। तो वैसे तो अब कुछ दिया है ना लोगों ने, किसी बैंकों ने दिया है एमएफआईएस, तो मैंने उसको बोला नहीं कि एक्चुअली ये तो चीजें अभी हो गया है, सैंक्शन हो गया करके मैंने बताया नहीं उसको। तो हमें ये बताना पड़ेगा सर कि ये कितने एमएफआईएस को रिसीव हो गया फ्रॉम अदर बैंक्स लैंडिंग, क्योंकि सैंक्शन हो गया। हाँ, तो वो पूछ रहा था अगर ये आपको पता है कि कोई कितने मेंबर एमएफएस को मिल चुका है फ्रॉम अदर बैंक से, आप बता सकते हैं ऐसा बोला। मैंने बोला सर देखिए मैं बता नहीं पाऊंगा, तो मैं उसको रोका हुआ। तो वो नहीं बता सकते ना अभी, जी सर, कॉन्फिडेंशियल होगा नहीं। मेरा हो गया, बता सकते हैं ये चीजें, उसको बता सकते हैं कि मेंबर एमएफएस को क्रेडिट सपोर्ट मिल रहा है अदर बैंक से, बता सकते हैं। बता रहा था अगर हुआ तो बता रहा है ऐसा होगा। इस साइड से कॉल किया तो जी सर उसी के बारे में पूछ भी रहे हैं कि अगर कोई और बैंक से आपका कुछ फोन आ रहा है, ये सर मेरे में कुछ हमेशा एक ही पेज में रहना पड़ेगा सर, अगर वो किसी को रिपीट कर रहे तो सभी लोग कर सकते हैं ना। मैं तो बताएगा फिर मैंने बताऊंगा, थोड़ा वो ट्विस्ट हो जाएगा हमारा।
ये किसका है? ये है जी। हाँ बालाजी कौन सा बालाजी? तिरुपति वाला बिल्कुल। चलो
आज मैं कितना खा रही हूँ सब हाई कैलोरी और सब भयंकर मीठा है। ये खा सकते हैं, ये खाया नहीं मैंने। ये तो बढ़िया है, खा के देखो, बॉडी खा के देखो। है ना, बढ़िया सा टेस्ट है। आप लोग चाय पिएंगे क्या? अच्छा है, बताओ। किसकी इच्छा नहीं है इस दुनिया में? चाय पीने की इच्छा आज किसकी मर्जी? इसके साथ गीजर का मूड काफी खराब है। गीजर का मूड के खिलाफ बड़ा गहरा अफवाह उड़ने की तैयारी में है। कुछ सुना क्या उनसे? हम तो लास्ट सुन रहे हैं। आपने भी सुना होगा। तो बोलने लायक नहीं है। देखिए, मैं सुनी, बस मैं बोल नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ, कुछ आपने भी सुना? फर्स्ट टाइम। हम्म In like 18 years, हम्म I've listened this. Never heard of this. एक बार किसी ने वैसा किया था। मैं तो मैं मैं परेशान हूँ। परेशान क्या, मैं आश्चर्यचकित हूँ। एकदम सेंचुरी बात है, हैं? सेंचुरी बात आप ही ने तो बताया था। मैंने बताया और क्या? तो जल्दी अब मुझे पता कैसे चला? फ्लाइट में हुआ था हाँ, आप मैं बोल जा रही थी। देवेंद्र को किसी ने बोला है? नहीं, मतलब ये मुझे नहीं बोला, ये तो बड़ा खबरी है अपनी। नहीं हमें सबसे बाद में इसको इसको नहीं, मतलब मैं तो क्या हुआ? मैं जाऊँ मैं तो रात में नहीं सोता, सच बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा है? ड्रामा अलग ही लेवल का था। जिस दिन मेरे बाद में शौक लग रहे थे, जैसे मैं उठ रहा था, मैं बोल कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? फिर मैंने बोला मैं किससे डिस्कस करूँ ये चीज, अपनी जो भावना है, इससे मैं डिस्कस करूँ, कोई जाएगी I think I'm just not- घर में कितनी बड़ी चीज। That's why I thought of those things. Then I could make out very
there was some indication I could see. Means I was little bit surprised, लेकिन मैं ना ये सब चीज में इतना डीपली नहीं जाता हूँ. It's disaster. एक्चुअली बड़ी जोर से डिस्कशन हो रही, तो मैंने सोचा कि ऐसे वो खड़ूस टाइप के इंसान है तो इस बारे में हो रहा है. अब इस बारे में हो रहा है ऐसा दिमाग में था ही नहीं. चीज थैंक यू. बर्थडे पब्लिक बढ़िया है. मैंने बोला व्हाट्सएप पे करना मतलब होता है फेस टू फेस करना.
So in Mr. Sriradhi, sir, Devendra calling from Service from Delhi. Sir, this is two times talk for 2 days. No problem, sir. Yeah. So actually, it's regarding some like information we needed from federal government. So actually, we are putting this update conclave. That is the event, sir, for not-for-profit MFIs in Kolkata. So the date is 18th of June, so second half. And post that we have a AGMs on 19th of June. We have a full day AGM. And before that, we have this not-for-profit MFIs discussion, sir. We request any senior representative from federal bank, either you or any of your colleagues who can attend this meetings. Uh, yes, the presentation will be done by three bodies. Like there are national stock exchange who will be evaluating on securities stock exchange and how NLP can be supported in that. Apart from that, we have one section with recording, sir. Recording it, and one more is with informative analytics and research. They are also presenting. So we have three presentation that are lined up, and also we have one session, a round-up session with all the MFIs as well as other not-for-profit institutions. So it's only an invitation for not-for-profit MFIs. And we request also from federal bank if anyone can attend. So it will be good for this. Yes. Okay, sir. Yes, sir. Right. Yeah. Okay, sir. Right. Yes, sir. So meanwhile, I'll share it with the agenda for this event, sir. And we are aware of this AGM is on 19th of years. So we are looking forward to your part because we have a special request from Dr. Sai. And so I just directed it. Yes, sir. Not making. Thanks. Okay, sir. Okay, sir. क्या नहीं खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे No problem. So this is okay, I'm sharing the agenda, sir. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. क्या
और क्या रह गया? फेडरल बैंक आ सकते हैं फेडरल बैंक उनका मीटिंग में में तो आए मीटिंग किया था तो सही आ सकते हैं कल हम लोग कंफर्म करके बता उससे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है रिगार्डिंग सेशन ओनली एज अ पार्टिसिपेंट ये क्या हम भेजेंगे उनको हार्ड कॉपी भी? ना 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 बात किए सर? हम्म
तो बाकी दोनों को सदाब आजकल ज्यादा ही बिजी है। On this participation in our this hometown this strategy leadership program in training in India. So if you can send some of your colleagues, just for 6 weeks, 6 week expert. So if it is like so if it is like your partner institution, if you want to send someone, please sponsoring them. I don't know. And also like the second one is from you, it's from Canada. If you send us like 4 5 participants, will be it's a very good training. I think Sanita has sent you. Once again, I said. Okay. I will looking forward to that. एम सर्विसेज से देखिए। Sanita. हम्म Down the email. हम्म This very. Yes, discuss with the study and send it to please analyze. Sanita. I feel so bad. क्या कर सकते हैं? I will talk about these things. So like the event who is meeting the one. Sunita will simply हम्म is to ask the 50 box है जो कभी कभी करती है या इसका बहुत ऐसा भी नाम बहुत से रिस्पॉन्स लेकिन उन्होंने game yes first then he was like for 2 seconds he taken yes taken aback and like and okay all this time see I thought that he didn't get key in my office so he has gone he was doing somewhere maybe at but people thought of this one that he is thinking that I'm getting his thing. Then you know the daily meeting for that. He would see only you cannot touch her. See, he was trying to touch her. तो यहाँ कई बार देखा, फिर मैं सोची कि अच्छा चलो अफेक्शनेटली कोई छू लिया कुछ। और मैं खुद को ही सोच रही थी जितना मैंने देखा और जितना मैंने खुद से सुना, मैं सोचा कि मैं बहुत बदमाश हूँ, ऐसे उल्टा सीधा सोचती बट He has to something roughly she would just have been so this or also because he is a pain. मैं उसके बाद सोचा कि मेरे सामने ये सर मामा नहीं मेरा उसकी तरफ से एक दो जैसे वो फेंकते हैं ना, क्या बोलते हैं मछली पकड़ने को, वे उस टाइप। तो मतलब कि जैसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं ना उसको, उसी उसी तरह से भी किया है। तो ये लोग मैं अच्छा तो ये लोगों को कहना वही है, अगर वो करना होता तो हमारे बहुत सारे फोरम है जहाँ भी डिस्कस मतलब लोग आपसे डिस्कस कर सकते, अगर होता तो क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज इट इज सम काइंड ऑफ गोइंग। this discussion will also happen sometime. एक बार हुआ था एक मार्टे बोलते किसी ने वो वो बबलू भैया का कुछ था उसमें ना, टीम ऑफिसर काम करता था पूरा टीम ये कर दिया था रेजिग्नेशन दे दिया था और सुधीर जो हमारा है ना अभी सुधीर वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट पार्ट ऑफ मतलब इस रेजिग्नेशन अच्छा, फिर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड हो गया, चला गया वो उसी में चला गया। वेरी सैड।
ज्योतिर्मय कौन? जिज्ञासा किया है। नहीं देगा। वो जैसे समावेश के लिए किया ना, समावेश को जैसे बंद किया वैसे ही जिज्ञासा। समावेश का जो रीजन है ना कि बिल्डिंग पोर्टफोलियो, उनका एक वो है टर्म बिल्डिंग पोर्टफोलियो। तो बोला नहीं, हाँ हमको पता है, लेकिन अगर हम डिसबर्स कर देंगे तो और भी प्लेट कर लेंगे, खत्म ही हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा प्लेट सभी कोई कर रहा है तो उसी में हम कर रहे हैं। समावेश का कहना ये था। तो बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सिमिलर केस जिज्ञासा का है। लेकिन और इसका भी, इसके लिए भी बात किया था ना मैंने, मुथूट क्या मतलब, हाँ मुथूट से। मुथूट का कहना है कि अभी तो सेक्टर इंप्रूव कर रहा है तो थोड़ा सा सोच रहे हैं, बट वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है जिज्ञासा। तो देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रियंका। अगर आप प्रियंका से बात करो, अरेंजर का वो लोग करेंगे बोले थे। एक बीजीएम
ये खा नहीं रहे आप डिनर भी खाओगे? हाँ? डिनर भी खाओगे? डिनर नहीं खा नहीं खाओ डिनर खाओगे आप? हाँ मैं आपको राइट ही बोला। हमें शेयरिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट में पूछता हूँ। मतलब ये जो खाना था, इसके बाद डिनर खाएगा नहीं। वो तो सब लेट हुआ 3 बजे तो कौन डिनर करता है करते हैं। वैसे वो डिनर में काउंट होता है 3 बजे पे। क्यों बोले? आप इसको चलो मैं इसको उठाती हूँ साइन नहीं इसको लगाऊंगा आप कैसे निकल गया पता नहीं कंट्रोल से खाना चलाना है। ये तो थोड़ी है यार। इसका ये बत्ती नहीं खाती। क्या होता है इसकी? चाहे वो पत्ती चलना चलेगी। ठीक है। नहीं है आपके पास? ये बनाया था अच्छे से टाइम अभी बत्ती कैसे करके लगा दी इसका होगा क्यों लगा अपन ये गया ये पर? क्या नहीं लगा हम कैसे करते? मुश्किल से उस फाइल को बनाया था इसका एक तो करो। एक ही सेकंड। हाँ एक ही थ्रेड में करूँगी और इधर जो होता है वीडियो देखते हैं। नहीं कर दी हाँ उसी में रखिए वो राजू आएगा तो बोलेंगे उसको नहीं है ना। हाँ तो आएगा जब हाँ। उस- नहीं। हम्म,
सुजाता कानुमुरी, कानुमुरी। तो ऐसे लड़की आई हुई थी हमारे रिट्रीट में, जिनके बाल ऐसे घुंघराले हैं, और वो जिंदगी में कंघी नहीं यूज करती। बाल उनके पकड़ो तो एकदम लगता है कि घोंसला है चिड़िया का। मैं बोले कि इसको तुम कंघी कैसे करते हो? नहीं करते। आपने ऐसा कभी देखा था? तो वो दोनों ही ऐसे करते, रोज शैम्पू करते हैं, वो शैम्पू से जितना रहता है वो, और शाम तक पूरा ऐसे घोंसला बना के घूमते रहते हैं। तो मैंने चोटी बनाने की कोशिश की एक, तो वो फिर से खोल दी 10 मिनट में। हाँ,
दुनिया बड़ी अजीब है। ताना ताना ना 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 ना।
चाय चाय दी देना। कौन नहीं खाती? हो और नहीं खा पाऊंगी। लो लो। आज मैं खा ही रही हूँ। लड्डू केक आइसक्रीम ये ये उड़ीसा गवर्नमेंट में एक सुभद्रा स्कीम चल रहा है, ठीक है। उस पे मीम बना रहे हैं लोग। एक 5,000 देने के लिए वो 50 बार दौड़ाता है। वो तो फालतू का पैसा है। देगा देगा नहीं देगा नहीं। वो लाडली बहन वार का इक्विवेलेंट है।
Mm.
6 बज गया। उफ, डर गए, डरा दिया। और दिवाली में कभी आलू बम फोड़ा है? ना ना ना, मुझे वो आलू बम नहीं फोड़ा। पटाखों से डर लगता है। आलू बम क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? आलू बम बहुत भयंकर आवाज है, ध्यान मत रखना। और भी नहीं करूंगी मैं तो। और वो ऐसे आसपास की फोड़ा है, मैदान में फोड़ा है। वहां फोड़ के भागाना पड़ता है। लेकिन अब वो नहीं आ रहा है, मतलब विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या चीज बोल रहे हैं? आप स्ट्रॉन्ग बना देंगे सर, कैपेसिटी बिल्डिंग का डिफरेंट। सर वो वैसे आप क्या बोल रहे हो वो पकड़ेंगे क्या क्या है इसके अंदर। आप लोग वैसे स्ट्रॉन्गली बोलते हैं तो उसमें कोई शायद का कोई मतलब नहीं। क्या आपका जो पॉइंट होता है वो सारे लोग समझ में आ जाता है। क्या नहीं तो आप बोलते हो ना पहले ये तुम्हारा ये चार्ज मतलब इसको दिव्य ज्योति को भी एक बार फोन करना। संगीत हम्म whatever meetings are going on to ministries. मिनिस्ट्रीज। Ministries, you know, response of this government's mail. हाँ, उसका ट्रैक करो कौन से इशू के ऊपर अभी कौन सा आ गया या फिर पिछले साल का? हमारा मेल आता है उसमें हाँ, उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमारा किस चीज के ऊपर कितने बार रिस्पॉन्स आया है, मतलब रिस्पॉन्स क्या है, इसको थोड़ा सा ट्रैक कर। अरे माइक्रो फाइनेंस के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं, रेगुलेशन के बारे में पूछते हैं। हाँ, तो तीन तीन क्वेश्चन है, उसको घुमा फिरा के इधर से उधर से इधर से उधर से पूछते रहते हैं। कभी कभी बिहार बोल देते हैं, कभी महाराष्ट्र बोल देते हैं, बस उतना। कितना समझाओ नहीं समझ। 8 लोग हमारे हो गए हैं एनआईबीएम के लिए। 8 कैंडिडेट हो गए हैं एनआईबीएम के लिए।
Yes, always. Yes. हाँ नामो नहीं है नाम होता है। एक तो ये है जो ट्रेन में क्या नाम है क्या था बंदे बंदे को एक नमू ऐसा कुछ भी है ना आजकल नमू भी करा क्या है आजकल नहीं, ये पुराना हो गया, पुराना हो गया। वो नमो नमो बोल के अभी फुस कर गया ना, अभी अभी कोई नहीं बोल रहा है। नरेंद्र मोदी अपने नाम को कितने ही तरह से चारों तरफ से काम करते हैं। आपको तो दिखी रहा है तो नंबर वन प्रोडक्ट है। तो मैं क्रेडिट गारंटी मिलती है तो मैं और तुमने भी करा उसको अगर मुझे क्रेडिट सब लगा दिया बंदे को नहीं मोदी क्या है ना सर क्या होता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं वो लाइमलाइट पे रहता है चाहे कितना भी रिस्क वाला काम हो या बेकार वाला काम हो वो लाइमलाइट में रहता है तो ये चीजें कभी वो उसको पता है सर उसको पल्स पता है कि जो लोग वोटर्स हैं उसको कैसे खींचना है उसमें बहुत स्मार्ट है वो सर वो क्या करता है कि वो इसका इतना कनेक्शन है ना लोगों के साथ गरीबों के साथ लोगों मतलब सारे लोगों के साथ सर इलाइट उनको फॉलो करता हूँ ऐसे तो प्रॉब्लम है but this fellow this there is someone called Devendra he is supposed to be an economist and he doesn't understand the economics or economics parameter तो लेना चाहिए सर मतलब मैं तो उसके पल से जा रहा हूँ कि वो तुम तो नेशन बनते हैं तुम तो उसका वो ड्रेसअप और पल से मतलब है या फिर तुम्हारे टेबल पे क्या खाना होगा या तुम्हारे बेटी का क्या फ्यूचर होगा इसके ऊपर मैं भी अगर जब तो मुझे क्रेडिट डिस्बर्समेंट मुझे नहीं मुझे भी कोई फायदा नहीं तो चाहिए फिर भी क्यों कर रहे हैं अपैरेंटली तुम्हारा नीट चला गया सीबीएसई चला गया तुम्हारा ये क्या तुम्हारा एसएससी चला गया सब टूट गया अब बोल your daughter if your daughter is passing from there and she wants to get into like other country going other country for her studies for her job we get it we will not get it because no because seriously has been supporters now, this year fellow you have this year Dharmendra Pradhan he's telling that नहीं पेपर पे लिख रहे हो कुछ क्वेश्चंस लिखो व्हाट इज दिस नॉनसेंस पूरा वो सामने बोलो और एक साल के बाद वो सामने को ड्रॉप आउट किया फिर वो लोग उन लोग को क्या करते हैं कि वो लोग अगर ये रहेगा मतलब एग्जाम अगर देगा भी फिर वो जो मोमेंट था ना मोमेंटम ये खत्म हो गई अब वो ये बंदे लोग क्या करेगा 2 साल बर्बाद होता है पूरा बर्बाद हो जाते हैं इंसान तो एक भी खत्म हो जाता है आगे कुछ एक बहुत सही कर देते ये हो जाएगा वीडियो बहुत पुराना था ये भी सब कुछ करा सकते हैं नंदे जी मुझे फ्राइडे भी बोला था ये भी अंदर क्या हुआ है तुम्हारे मतलब पैसे हमारे दिमाग से वेस्ट आज सोए बोला आज भी लाइव कहीं मुझे तो डर उससे लगा था डर मुझे लग रहा है कि जीत से का उसमें डाल दिया उसने बुढ़िया की
आपने कुछ चेंजेस नहीं किया ना सर, वही दिन वैसे ठीक है सर, काफी इंफॉर्मेटिव है। आप तो वैसे भी इंफॉर्मेशन है, हाउ यू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इज वेरी, नहीं आपको ये देखने की जरूरत भी नहीं है, तो आप खाली देखो, आपको पता ही नहीं क्या है। तो एकदम बट यू नो देयर इज आल्सो सम, तुम तुम्हारा देखोगे, हमारा जो लास्ट वाला इसमें क्या था, चिंतन ना क्या था, चिंतन बैठक, हाँ चिंतन बैठक थी। सो व्हाट व्हेन आई एडिटेड लास्ट में, देखो उसका बहुत सारा चेंज किया था। जैसे मान लो कि हमारे डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट का हम लोग क्या करते हैं, उसका एक टैगलाइन कर दिया था। उसके बाद हमारा जो, तुम देखोगे कि उसका जो डिफरेंस डिजाइन करके उसको दिया था, उस टाइप का चीज चाहिए तुम्हें दिखाने के लिए, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, हाउ मेनी टेक्नोलॉजी रिलेटेड interventions we have done, like, and then how much, what are how many training and what are the training, इसको देते हैं। तो तुम्हारा एक हो जाएगा कितना है। उसके बाद मान लो कि प्रोसेस, finance, marketing. So that is the process. Body kind of thing. Same body, how many trainings we have done, and then put like on what and what. तो वो एक हो, तो ये हमारा इस स्लाइड को हमें ठीक करा। इसमें मैक्सिमम तीन चार स्लाइड होगा, पता नहीं अगर आप चेक करेगा तो 10 स्लाइड करेगा, हमारे टीचर 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 इसका सुविधा के लिए टीचर आएगा, इसका टीचर काम करता है। एक बार जब बस हमारा काम से पहले देखिए, दो पहले देखिए, तो मैंने आधे घंटा पहले किया था, फिर चेक करके फिर और मैंने 15 मिनट पहले कि V1 देखा है वही वाला है, V1 वाला है। तो ये नहीं देखा तो एक बार सीधा आते हैं एक्सपेक्ट है ये लेवल आज और कुछ है।
ये चंदन के थ्रू मिला है, सारे लोग कॉमेंट कर मतलब पूरे आदमी कभी करना पड़ेगा इसके, हाँ फाइनल नहीं कर सकते, हाँ केवल ना इसके साथ लैपटॉप का ऑन करते हुए भी हल्का दिन भर डेटा कितना देंगे आप? कल देखेंगे, दिमाग ही नहीं काम कर रहा।